Hello students, welcome to my class. Today in this video, we are going to discuss how to find inequalities of shaded region. So first of all, we will take this line and the equation representing this line is 2x plus 3y equal to 12. आप देख सकते हैं कि this line divides this whole plane into two parts, lower half and upper half, and origin and the shaded region lies on the same side of this line. Lower half में ही origin भी है और shaded region भी है, दोनों एक ही साइड हैं. तो और 12 पॉजिटिव है. अगर ये पॉजिटिव है तो हम लेस देन लेंगे. इस तरह का केस हो कि लाइन के एक ही साइड ओरिजिन और शेडेड रीजन हो और ये कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव हो तो लेस देन का साइन लेंगे. फिर हम इसको वेरीफाई भी करेंगे कि क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है. तो 2 इंटू 0, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0 रख देंगे. तो आप देखेंगे कि 0 लेस देन 12 है, विच इज़ ट्रू. सो वी कैन से origin lies in the solution region of this line. तो इस लाइन की जो इनइक्वालिटी हुई वो होगी 2x plus 3y less than and equal to 12. Why equal to? Because the line is continuous. Let us take this xy equal to 3. We can see this line xy equal to 3 again divides this whole plane into two parts, lower half and upper half, and origin and the shaded region they are lying opposite side of this line. इस साइड origin है और shaded region opposite side है. जब ऐसा केस हो, दोनों opposite हो, तो हम greater than लेंगे. लेकिन अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो less than. Let us see whether origin satisfy this equation. No. 0 greater than 3, which is false. So you can say the origin is not lying in the solution region of this equation. तो solution region दूसरी साइड है. Let us take x equal to 4. This x equal to 4 vertical line divides this whole plane into two parts, left and right, and it is clearly shows that shaded region and origin both lies on the same side of this line, that is towards left. So we will take less than if the 4 is positive. If it is negative, we will take greater than. Now इक्वलिटी भी आएगा क्योंकि लाइन कंटिन्यूस है. यहाँ पर हमने इक्वलिटी नहीं लिया है क्योंकि द लाइन ब्रोकन है. ब्रोकन होने की वजह से ये इक्वल टू का साइन नहीं आएगा. चेक भी कर सकते हैं. 0 इसमें रखेंगे, ओरिजिन का x इक्वल टू 0 रखेंगे. 0 लेस देन 4 विच इज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दिस इनइक्वालिटी. नाउ लास्ट y इक्वल टू 7y2. y इक्वल टू 7y2, this horizontal line divide the whole plane into two parts, lower and upper, and origin and the shaded region they lies on the same side of this line, that is in the lower part. So we will take less than if this is positive. If this is negative, we will take greater than. Equality we also, why equality? Because this line is continuous, not broken. Now x is positive, y, x is positive and y is also positive. The shaded region lies in the first quadrant where x and y both are positive. So these are the inequalities of this shaded region.